Okay, so when I talk about management accounting, I just told you in the beginning, what is it? It is one of the branches of accounting. Okay, where I told you all the aspects of what financial accounting deals with, what cost accounting deals with, what taxation deals with, management accounting deals with how to get funds and allocate the funds. Okay, ये क्या है मैम, ये क्या बोल रहे हो आप, हाउ टू गेट फंड्स एंड एलोकेट फंड्स? ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पीक्स अबाउट दिस ओनली. पैसा कहाँ से आएगा और जो भी पैसा आएगा वो कहाँ पे खर्च होगा, इसका ये मीनिंग होता है. हाउ टू गेट फंड्स, हाउ टू ऑब्टेन फंड्स एंड हाउ टू एलोकेट द फंड्स. ओके, सो मैं आपको इन अ नटशेल एक चीज़ समझाती हूँ. आई वुड लाइक टू show you something. Yeah, just try and understand. In your lower standards, in your FIJC, you had studied this equation, asset equal to liability. Yes or no? Right? Am I correct? You had studied this equation. We said assets are equal to liabilities. Okay. Now this equation today I will justify to you, and that justification is management accounting. That is assets equal to liabilities. Now when I am saying how to get funds, okay, so getting funds, okay, funds can be bought through, first way is issue of share. हाउ टू गेट फंड्स मीन्स कैपिटल कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा. तो पहला तरीका पैसा लाने का कंपनी में है इशू द शेयर्स. ओके, रेज योर शेयर कैपिटल. ठीक है, व्हेन आई एम इशूइंग माय शेयर्स, ऑब्वियसली आई हैव टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, राइट. इशू करो, पब्लिक को शेयर्स इशू करो, पब्लिक खरीदेगा उसको, आपके पास पैसा आएगा. हाउ टू गेट फंड्स, दिस इज वन ऑफ द वे टू गेट फंड्स. ठीक है, सेकेंड तरीका पैसा लाने का है लोन्स, बोरोड फंड्स. ओके, बोरोड फंड्स, पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से आएगा. बैंक से लोन ले लो, बैंक लोन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अदर देन बैंक्स जो लोन देते हैं उनसे ले लो, रिलेटिव से ले लो, फ्रेंड से ले लो, मम्मी पापा से ले लो, मतलब फैमिली से ले लो. समझ में आया ना? हाँ, बोरोड फंड्स. ठीक है, करेक्ट. एवरीबडी अग्रीज टू दिस. एंड द थर्ड वे ऑफ गेटिंग फंड्स इज यूजिंग योर रिजर्व्स एंड सरप्लस. आपके पास जो प्रॉफिट्स बचा है वो भी तो आप इंट्रोड्यूस ही करोगे ना, कम आई मीन अपने लिए, अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करोगे ना. बचा हुआ जो लास्ट ईयर का ओके रिजर्व्स एंड सरप्लस है उसको आप यूज करने वाले हो. ठीक है, ओके, या. सो दिस व्हाट आई टॉट यू, ये हाउ टू गेट फंड्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देर इज अ टर्मिनोलॉजी टू इट. इसके लिए एक टर्म यूज किया गया है और उस टर्म को बोलते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स. ओके, थोड़ा सोफेस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करेंगे हम. ओके, सो आगे से आप ये मत बोलना हाउ टू गेट फंड्स, से व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड्स. ओके, टू फर्स्ट एक्सप्लेन यू आई यूज अ इजी लैंग्वेज. नाउ once you have understood the meaning of that language, now I will take you to the terminology which is used. So how to get funds is known as sources of funds in management accounting. So what are the sources of funds? Issue of share capital, borrowed funds and reserves and surplus. ठीक है, फाइन. तो तुम्हें नहीं लगता है ये L है, लाइबिलिटी है, हमारा जो इक्वेशन है A इक्वल टू L, तुम्हें नहीं लगता ये L पार्ट है इसका?
लाइबिलिटी का एवरीवन, इज दिस क्लियर? ठीक है, थोड़ा इसको और एब्रीविएशन में लाते हैं. ओके, ग्रेट. Say my share capital is 50,000. Say my borrowed fund is 20,000. And say my last year ka reserves and surplus is 30,000. So what is the total? The total is 1 lakh. Okay? चलो इसको साइड में रखो. Next meaning of management accounting is what? What is the next meaning? Allocation of funds. Allocate the funds. अब ये जो पैसा मेरे पास आया है, मैंने जमा किया है, अब ये मैं कहाँ कहाँ खर्च करने वाली हूँ. एलोकेशन में कहाँ कहाँ मैं वो पैसा खर्च करूँगी. खर्च करूँगी मतलब आई विल नॉट गो टू द टेरेस एंड ब्लो द मनी. नो, खर्च करने का मतलब in connection to business. Where am I going to do this expenses, incur this expenses in connection to business? The word connection to business is very important here. Okay, yeah. So let me see. Obviously, the first thing that I'm going to do is I'm going to purchase my fixed assets. So I'm going to invest in fixed assets. ये जो पैसा मेरे पास आया 1 लाख रुपया, ये मैं इस तरीके से खर्चा करने वाली हूँ. ओके, सो से मैंने कितने का, से मैंने 60,000 के फिक्स्ड एसेट्स ले लिए. ओके, 60. ठीक है, फिर नेक्स्ट खर्चा मैं करूँगी इन्वेस्टमेंट्स. किसी ने मेरे कंपनी के शेयर खरीदे ना, इशू ऑफ शेयर्स, आई इशूड शेयर्स एंड लोग पीपल हैव परचेस्ड. ऑपोजिट भी तो हो सकता है, मैं किसी कंपनी के शेयर्स भी तो खरीद सकती हूँ. ओके, मैं भी तो बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट्स कर सकती हूँ. आई कैन ऑल्सो हैव एन एफ डी इन बैंक. ओके, आई कैन इन्वेस्ट माई मनी इन बैंक सो दैट आई गेट रिटर्न्स. या आई कैन डू many things with respect to investments. Okay, yeah. So say I have an investment of say around, chalo I'll put 10,000. Okay, so my 70,000 money is blown here. Blown matlab I have incurred here. Okay, now the third activity that I'm going to do is, कितना चाहिए, 1 लाख रुपया मिला ना मुझे, तो 1 लाख में से मैंने 60,000 फिक्स्ड एसेट्स में डाल दिया, 10,000 मैंने इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया, अदर इन्वेस्टमेंट्स, आई मीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. लॉन्ग टर्म है, नॉट शॉर्ट टर्म. या, और बाकी का जो पैसा है कितना है, 60, 70, 30,000. ओके, बाकी का जो 30,000 है, तो इस तरीके से मेरा ये 1 लाख रुपया पूरा हो जाएगा. दैट इज वाई एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ए इज इक्वल टू एल ऑलवेज. अभी समझा एवरीवन? अंडरस्टूड एवरीवन हाउ दैट इक्वेशन इज जस्टिफाइड विच यू हैड स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड? सी what is the connection. उस वक्त तो आप लोगों को समझा ही नहीं होगा कि ये क्या है, ए इक्वल टू एल, ये क्या क्यों. आज समझ में आया कनेक्शन, ए इक्वल टू एल क्यों होता है. या, बिकॉज वॉट एवर, how to get, because we are answering to the question how to get funds. When we satisfy the answer to the question how to get funds, we will satisfy the second question, where to allocate the funds. Okay, and once we satisfy both the question, then the equation a equal to l is justified. Okay, अभी आप सोचोगे ये 30,000, कैन एनीबडी थिंक एंड टेल मी ये 30,000 कहाँ खर्चा होने वाला है? एनीवन जस्ट ट्राई, एनीवन जस्ट ट्राई दिस. फिक्स्ड एसेट्स बोल दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट्स बोल दिया, ये बचा हुआ 30,000 कहाँ जाएगा? Where will this 30,000 go? Anyone? Saurabh is saying taxes. No, Saurabh, no. Why would I collect funds to pay taxes? No. I said whatever I allocate money, it should be in connection to business, for the resources of the business. So I'm giving you a hint also, for the resources of the business. Fixed assets तो मेरा resource है, इससे तो मेरा business चलेगा आगे. रॉ मटेरियल जब तक WIP में कन्वर्ट नहीं करूँगी, WIP को फिनिश गुड्स में नहीं कन्वर्ट करूँगी, तो सेल कैसे होएगा? तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए चाहिए ना, फिक्स्ड एसेट्स तो चाहिए. एनीवन?
No, reserves are already there on the other side. I am talking about this 30,000. I'm talking about this 30,000. Allocation of funds. Where will I allocate this 30,000? ये मैं क्यों ये पैसा कहाँ यूज करूँगी, कहाँ खर्च करने वाली हूँ? Okay, so there is something called as students. There is a concept called as working capital. Okay, so my this 30,000 I am going to yeah, allocate for working capital. What is working capital? It is that capital with which the day-to-day activities of the business can be met. Day-to-day activities of the business can be met. That is called as working capital, जिसको हम बोलते हैं रोकड़ा. ओके, जब तक तुम्हारे हाथ में रोकड़ा नहीं है, तुम्हारा ये जो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, ये सब बेकार है. जब तक तुम तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स को रेगुलेट नहीं कर सकते, ओके, ये जो तुम्हारा खर्चा है 60 और 10 का, फिर तो वो बेकार है अगर तुम्हारे पास इनफ वर्किंग कैपिटल नहीं है उसको चलाने के लिए. ओके, फिक्स्ड एसेट्स ले लिया आपने, अब उसको चलाना भी तो आना चाहिए. हाँ, तो तुमने उसके लिए क्या किया? तुमने उसके लिए एक लेबर हायर किया. उस लेबर को तुम हर महीने से 10,000 रुपया दे रहे हो, तो ये 10,000 क्या है? दिस आर योर मंथली एक्सपेंसेस. यू हैव टू पे हिम सैलरी एवरी डे. ओके, आपने जहाँ पे आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो वो जगह आपकी भाड़े पर है, तो आपको वहाँ का रेंट देना पड़ रहा है. ऐसे वहाँ का रेंट ही 10,000 रुपये है. अनदर 10,000 एवरी मंथ यू हैव टू इनकर. So for the smooth conduct of your business activities, the expenses that you meet is known as working capital. Am I clear to everyone what is working capital? Okay, yeah. So in a nutshell, अगर मैं आपको इसको इक्वेशन के तौर पे बताऊं, तो वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटी इज कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल. तो अभी आप लोगों को समझ में आया? ओके, और ये जो कॉन्सेप्ट है, this concept, ये this concept allocation, okay, to allocate funds, this concept is known as application of funds in management accounting. There is a term to it. I told you we'll be using a sophisticated term, application of funds. Okay, so management accounting teaches you two aspects. It deals with two aspects of accounts, okay, of a business, that is sources of funds, from where are you going to get the money, and the application of funds. Am I clear what is management accounting? Why are you studying this subject? Everybody, is it clear to you? Okay, so we are studying this subject because we should know how to get funds. I mean, what are the different sources of getting money into the business, how to pump money into the business, how to pool money into the business, and simultaneously that money which you have pooled, how to apply it for your resources, business resources. Okay, fine. Yeah, so this was the bottom line, this was the crux of this particular subject. Okay, now let me take you to the next part. Okay. Now this is what you should know. Next thing, what are we going to study in this? We are going to study in this vertical financial statements. Okay, now what is this vertical financial statements? ये होता क्या है? Okay, now let me introduce you to the next part of it. Okay, ये तो मैंने आपको explain कर दिया. Let me introduce to the next part. What are financial statements? Oh, what are these? If any, I tell you what are financial statements, you'll be thinking, oh ma'am, ये इसको financial statements बोलते हैं. हाँ, इसी को financial statements बोलते हैं. मैं बताती हूँ. First is profit and loss account. Okay, to be more specific, yeah. Manufacturing, trading,
and profit and loss account. Okay, next is balance sheet. तो ये दो चीजें तो इनसे आप वाकिफ हो. You already know about these two aspects. Okay, what you don't know about student is, yeah, you don't know the third aspect, that is fund flow statement. Then is cash flow statement, जो हम पढ़ने वाले हैं. This is one of the chapters. And the fifth aspect is notes to accounts. This you must have done in accounting standard 1. Notes to accounts, disclosure of accounting policies. कहाँ पे होता है वो? Notes to accounts में होता है. Okay, so अगर आप मेरे कंपनी में काम कर रहे हो एज अ सीनियर अकाउंटेंट, और अगर मैं आपको बोलूँ कि इन नेक्स्ट 15 days आई वांट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन माय टेबल, सो आई एक्सपेक्ट यू टू गिव दीज 5 things to me on my table. Am I clear about this? Okay. Yeah. So these are called as financial statements. What is financial statements? Which gives you the financial position of your business as on a particular date are your financial statements. It includes P&L account. P&L means it includes manufacturing, trading, and P&L. It is like this. Then balance sheet, fund flow statements, cash flow statements, and notes to accounts. Now, no more these fund flow statements exist. They don't exist now, but I'm just telling you it was a part of financial statements earlier. Now it is cash flow statement and notes to accounts. Am I clear till here? Is it clear till here to everyone? समझ में आ रहा है? Okay. Up. The next point is, yeah, what are these vertical financial statements? मैंने आपको पहले समझाया what are financial statements. ठीक है, अब मैं आपको समझा रही हूँ what are vertical financial statements. So this is also very easy. Okay, yeah, just try and understand, listen properly what I'm saying. ठीक है, now कैसा होता है? आप लोग ने मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट तो सीखा ही है. कैसे सीखा है? ऑब्वियसली द टी फॉर्मेट. ओके, विच इज ऑल्सो टी फॉर्मेट, मतलब द लेजर फॉर्मेट. तो द टी फॉर्मेट इज ऑल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. इसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. और एक है वर्टिकल फॉर्मेट. अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताती हूँ. है एक ही चीज़, बट मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ. Okay, vertical format or horizontal format. Horizontal format existed long back. अब it is scrapped. तो जो आप लोगों ने बैलेंस शीट सीखी है 11th और 12th स्टैंडर्ड में, अब आगे जाके आप देखोगे आप वो बैलेंस शीट सीखते ही नहीं हो, तो those balance sheets are scrapped now. Okay, now those old style of balance sheets don't work. Now there is a different style of balance sheet called as a schedule balance sheet. Schedule. Okay, so the horizontal form of trading manufacturing account कैसा था? Trading manufacturing and P&L. Opening stock of raw material here, purchase of raw material here, carriage inward raw material here, factory overheads here. Okay, फिर यहाँ पे होता था बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हियर. तो यहाँ पे हम कुछ क्लोज करते थे और हमें आंसर मिलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, फिर हम आते थे ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हियर. ओके, बाय सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हियर. फिर हम इसको क्लोज करते थे, हमको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट. ओके, फिर हम P&L अकाउंट बनाते थे. P&L में क्या डालते थे? एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये सब हम इधर डालते थे. ओके, देन यहाँ पे क्या डालते थे? बाय फाइनेंशियल इनकम्स लाइक रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ऑल दैट.
Okay, then we used to close this and then we used to get net profit or net loss depending on the situation. Do you all agree to this? Yeah. So this was the horizontal form of P&L account. दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, जो आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड से. अब क्या होगा, अब हम इस पे शिफ्ट हो जाएंगे. अब हम अकाउंट्स को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लेजर फॉर्मेट में नहीं पढ़ेंगे, हम उसको एक स्टेटमेंट में पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे पीएनएल स्टेटमेंट, नॉट पीएनएल अकाउंट. नाउ वी विल स्टडी इंस्टेड ऑफ पीएनएल अकाउंट पीएनएल स्टेटमेंट. तो दिस इज द वर्टिकल फॉर्मेट. मतलब ये बाय टू वाला फंडा नहीं होगा, सीधा एक स्टेटमेंट बनेगा. जैसे कॉस्ट शीट कैसे आप लोग ने पढ़ा, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम एंड द सीपीओ कॉलम, वैसा ही हम एक फॉर्मेट पढ़ेंगे फॉर द वर्टिकल पीएनएल. एम आई क्लियर? सिमिलरली अप्लाइज टू द बैलेंस शीट. जो आपने ओल्ड बैलेंस शीट पढ़ी, अब वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो हम स्क्रैप कर देंगे. हम पढ़ेंगे द वर्टिकल स्टाइल ऑफ बैलेंस शीट. ओके. सिमिलरली कैश बुक और जो कैश अकाउंट्स बनाते थे, अब वो सब नहीं बनता है. अभी सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनता है टू नो द कैश एंड कैश इक्विवेलेंस ऑफ द बिजनेस. ओके. Yeah. And any important highlights of the business, any major changes, remarkable changes reflected in notes to accounts. Clear everyone? So next lecture we will study about vertical P&L and vertical balance sheet. Is it clear? Just acknowledge it in the chat box.